On that note, it is now time for me to call upon the Vice President and Zonal Head Mumbai of SBI Mutual Fund. We have Mr. Aditya Gangal, who's joined us, of course, working in the BFSI domain with experience in corporate sales, business development, portfolio management, mutual funds, alternate investments, banking, and wealth management. I'm sure his expertise today is going to add a lot of value to us. So let's give it up for Mr. Aditya Gangal. Can I have the presentation? Thank you, NCube Collaborations. I was telling Ravindranath sir, it is very, very intimidating to be among the stalwarts and speak after the stalwarts like Venkat sir, Ravi sir, Porwal sahab. But what I will do is, thanks madam, you should thank them. They have made my job very easy. Most of the slides Ravindranath sir, Venkat sir and Porwal sahab has already covered. So I will quickly give a perspective. Yes, we know the kind of money which is pouring into mutual fund, and what Porwal sahab also suggested, it is a time to be optimistically cautious. So we at SBI Mutual Fund, what we are doing, where we see markets, I will try and cover it in 10 minutes. And if I exceed the time, please give me a indication. So this is something which we had recently presented to our Amundi partners. So Amundi is our foreign partner. So the entire team of Amundi was here. And when we were trying to showcase or do a roadshow, this is something I thought I will keep this line, how India is a strong wall in the, strong brick in the wall. So I is highlighted. Down. Sorry. So I'll quickly run through this flashback. Today we are on 23rd of November, 23rd of January. I believe a lot of you would have gone through this quilts, how over the years, what happened last year. So I will not waste much of the time on that. But if we see the performance of Indian indices, I believe last year was a year of two halves. First 6 months, it was a lot of euphoria, and then reality struck in, reversion to mean happened. So that is how the sectors and indices have performed. If we see last entire year, Nifty delivered a return of close to around 8.8%. But sectors which did well predominantly were pharma, real estate, and auto. And some of the laggards were FMCG, financials, and metals. Now, if we talk about global markets, both in terms of their local currency and dollar returns, I believe India, after years of stellar performance, this was a moderate performance. This is on the left-hand side is the December return for the month of December, and this is a YOY performance. And some of the geographies actually performed outstandingly well. And what Porwal sahab indicated, in spite of these rising debt levels, some of the evolved markets, the way they are performing, it is a matter of concern. What are the, in a short term, yes, India is a long-term structural story, and today we are talking about Viksit Bharat 2047. But yes, there are certain challenges which are there in medium to long term. India won't be insulated with whatever is happening, the way it is an interconnected world. So if we see, of course, he covered it in terms of valuations, though December and in month of January also we have seen some correction happening, but valuations are very stretched. The indicator, what we follow, the proprietary model that we have developed in-house, it is indicating that not only valuations, but earnings also last couple of quarters have been on a little downturn. And sentiments is the third parameter which we track in our overall model. Sentiments, in spite of market correction, has not come down. What he mentioned, Porwal sahab mentioned about SME, the kind of subscription which it is receiving. I mean, the financialization of savings, this juggernaut, somewhere somebody has to focus on financial literacy, where AMFI, I believe, under Venkat sir's leadership, is doing an exceptional role. Polarization, what again, sir touched upon it, so I will not speak much on that, but yes, the broad-based rally which has happened, mid and small cap, I believe large cap is something where we see incremental value which is there. I'll just blend to a precursor what sir mentioned about a history student. Now, if we see whether the cracks have started to appear, now we don't know, only time will tell. But on the left-hand side, it won't be visible from behind. It was 8 years of calm, and then we saw intermittent phases of increased volatility. Then again, if we see, this data is from 1979, and last 9 years, again, there is a calm. So is this a calm before a storm to come? Only time will tell. But
India, I believe, thanks to the overall DII, the rise from Phoenix of DIIs, every FI money which is moving out, there is a counter DII which is there, so it is cushioning. So FIs have also realized that exit is very cheap, but entry is going to be very expensive when they are coming into India. And what I am talking about, the pattern, if we see the bottom down chart, the trends have started to breaken. I mean, we had a streak, unbroken streak of consecutive months without a 5% decline. That streak has been broken. Consecutive quarters with more than 2% gain, that is broken. Now, last 9 years successively, we have had a good run in the market. Hopefully this year there will be a lot of volatility which will be there. Let us see how markets behave. And why India? I mean, all of us know the India story. I will quickly skip on to it. But typically when we talk about it, this is a presentation which we showed. The force vector that we talk about, I mean, what is a vector? Vector is an object that has both magnitude and direction. And I believe India as a country is a next story. If we talk about GDP quickly, let us assume a round number of 100 trillion. India is close to around 3.6, 3.7. Let us assume 4 trillion. We are 4% of the overall GDP. But then if we talk about the growth, the recent forecast, the IMF has projected the world to grow at 3.3%. It means the world would add $3.3 trillion every year. But India is slated to grow at close to around 6.5, 7%. It means though in terms of overall India's GDP share is 4%, but incremental GDP we will be adding 9 and 10% going ahead. So these are the tailwinds that we have for the long-term drivers: large and fast-growing economy, active democracy and political stability, demography and demand. I mean, inherent there is such a big consumption population, diversified equity market. I will spend a minute on diversified equity market. We have an interesting chart, and financialization of savings. I mean, this everybody knows. I can skip this slide. We are slated to be the largest, third largest economy maybe by 2026 end. And FIs, this is something which Venkat sir also spoke about. So if you see, FIs have been the net sellers. This is the secondary market data, though they have come, the same amount of money has come into primary market, private equity, startups, the companies which will be the part of Nifty or indices maybe 3-5 years down the line. But the entire FIs have been cushioned by DIs. DIs have been made a purchase of $62 billion last calendar year. But interesting number is of the $62 billion, $50 billion is contributed by mutual funds. So the way financialization of saving is happening and the way money is coming in, I believe mutual funds are here. Primary markets, we'll see. Taking ahead what data which Venkat sir also showed. Yes, Aadhaar card holders, PAN card holders, income tax filers, number of returns, but mutual fund folios are only 5.25 crores. And the kind of initiative which AMFI is taking in terms of new investors, digitization, the mutual fund Sahiye campaign, it will ensure that more and more investors are coming into mutual fund foray. Millennials have been a significant part of investors who have come in last so many years. This generation is a DIY generation. And with fintechs and the platform which is available to them, I believe we will see this number only going up. So this I will quickly skip. We are already 31% of the overall deposit AUM. And this again with new asset class coming in, asset light coming in, new AMCs will come in. Yes, investor will find it very difficult to navigate to 1,500 schemes, which were 995. This will only double and triple from here. But I believe for each and every need, there will be a scheme which will be offering. So this is a very interesting data when I talk about the markets. If you see on the left-hand side, we have shown country-wise what are the number of stocks with market cap in excess of 500 million. You will be surprised that after US and to a certain extent China and even Japan, and Japan has come in very recently because they are coming after a 30-year, I would say, slumber. But 815 stocks we have. Number of stocks which have quadrupled in 10 years, it is second highest to US. And number of consistent return stocks. So the definition of consistent return stocks is the stocks which have quadrupled in 10 years, tripled in 5 years, and doubled in 3 years. So if you see there, we have the highest amount of stocks, and it is across sectors. So I believe there is no better diversified market for a FI to look at as compared to India.
Also, in terms of why this is quickly, in terms of companies who have given a consistent ROE of more than 20% after India, after US, India is the only country where 1/3 of its companies have given the ROE of more than 34%. And this will only expand. We'll see that this financial year itself, there are close to 1.5 lakh IPOs which are planned. SEBI has given approval to around 45,000 crores and another 65,000 crores are waiting. So even though the FI money might not come into the secondary market, but DI plus FI, this will only ensure that good companies are getting part of the indices. Maybe this is more or less discussed, so I will not spend much of the time on that. This is one of a very big tailwind that we have. The corporates have deleveraged, banks' balance sheet have cleaned up. So the next cycle which will start, I believe we will be able to capitalize on that. Growth again, our governments always deliver out of compulsion. They never deliver out of conviction. So the growth numbers, the overall slowdown in economy, I believe has come in at a right time. There are a lot of events which are based. We have the Japanese central bank policy tomorrow, then we have our own budget, then we have our own policy. So it will be volatile, but growth is a concern, and I believe government in this budget will ensure that they are doing something to give a focus on growth. Rural prospects, yesterday HUL result and some of the commentary that we are seeing, rural, which was a pain, is picking up. It has happened that urban is now slightly slowing down, but rural is picking up, which is a very good sign. We had a very good rainfall this year, and the reservoir levels are also good. So that should also help in the rural consumption. And earnings again. So this was a brief snapshot. I hope I have not run much of the time. But last year, as we say, it was a year of two halves, where first half the momentum was doing good, value was doing good. Some of the cyclical sectors like PSU, maybe real estate, defense, all were doing good. Then in second half, we had the reversion to mean, and quality has started doing well. We feel next 2-3 quarters we will see the same phase, and we are expecting that these things will only improve. The kind of money which is coming in, it is getting challenging, but I believe new primary issuances and regulators and representative bodies having a vision, it will be a good decade, and it will be India's decade. Thank you so much. Thank you, Mr. Gangal, for joining us. Of course, sharing his perspective after hearing his, I would say the people whom he looks forward to interacting, and of course the tycoons of the industry. So very well-rounded presentation made our conclusion almost simpler for the team. So thank you on that. With that, ladies and gentlemen, we're going to be going ahead to our next speaker. We have Kamal Jeswani, who's a TEDx motivational speaker and India's first internationally certified financial coach. He's, of course, had clients like Raymond, Tata, Wipro, Welspun India, to name a few. And he's trained employees across India on personal financial planning. Let's see what he brings on the table as he joins us for his chat. Let's give him a warm, warm round of applause. Ladies and gentlemen, Kamal Jeswani. I don't like to stand behind the podium. Because anyway, I don't have a presentation. Am I loud enough? But still I would need a mic. Thank you so much. मोदी जी कहते हैं ना, न खुद खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा. तो मेरा भी वही है, न खुद सोऊंगा न किसी को सोने दूंगा यहाँ पर. Till now we have been hearing about Viksit Bharat. And I would be talking about Viksit Bharatiya. Because for me that is more important. क्योंकि अगर भारतीय विकसित नहीं है तो भारत का विकास किसी काम का नहीं है. Then we are again going to go into the same phase कि 1% people are owning 80% wealth and remaining are poor. So that is not Viksit Bharat. Okay, so the real Viksit Bharat is when every Bharatiya is Viksit. Now, who is a Viksit Bharatiya? विकसित भारतीय वो है जो रास्ते पे चाय वाले को देखता है और ये समझता है कि ये चाय वाला भी यहाँ पे आके ठेला लगाए, उसको पता नहीं है कि चाय बिकेगी कि नहीं बिकेगी. ही इज नॉट अवेयर, ही डज नॉट नो कि बिकेगी भी तो कितनी बिकेगी, लेकिन वो वहाँ जाके अपना सेटअप डाल रहा है. ओके,
सो दैट्स व्हाट एन इंडियन हैज टू डू, कि हमें भी अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करना है आज। ये नहीं सोचना है कि ओ रिटायरमेंट के लिए 10 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, उतना कैसे होगा, नहीं, शुरू आज करना है। विकसित भारतीय वो है जो ये चाय वाले से भी एक एग्जांपल ले लेता है कि चाय वाला भी सिर्फ पानी नहीं डालता, सिर्फ दूध नहीं डालता, सिर्फ चाय पत्ती नहीं डालता, सिर्फ शक्कर नहीं डालता, सिर्फ अदरक नहीं डालता, वो हर एक को एक प्रोपोर्शन में डालता है। विच मीन्स हमारा एसेट एलोकेशन, म्यूचुअल फंड सही है लेकिन सबके लिए नहीं है। ओके, म्यूचुअल फंड कौन सा सही है, कितना सही है, कब सही है, क्यों सही है, वो सब जानना भी जरूरी है, वो प्रोपोर्शन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि आज भी मेरे पास लोग आते हैं, सर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, पूछता हूं कौन से म्यूचुअल फंड में करना है, क्यों करना है, कितने टाइम के लिए करना है, सर वो सब नहीं मालूम, हमने टीवी पे देखा है म्यूचुअल फंड में करना है। तो मैं उनको वही समझाता हूं कि आप लोग को भी एसेट एलोकेशन को पहले समझो, फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझो। अवेयरनेस हो रही है, बहुत सारी अवेयरनेस हो रही है। मेरे पास आज भी लोग आते हैं, जस्ट लास्ट मंथ आई डिड ट्रेनिंग एट ONGC, वहाँ पे सब रिटायर्ड लोग, और उन्होंने पूछा मुझसे, सर हम लोग को SWP में इन्वेस्ट करना है। मैंने कहा SWP तो सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान होता है। ओके, सो दैट अवेयरनेस, तो विकसित भारतीय वो है जो इन सब टर्म्स को, कॉन्सेप्ट्स को समझता है, सिर्फ 1 मिनट के रील देखकर नहीं, बल्कि या तो पूरा का पूरा सेशन अटेंड करके या एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर के यूट्यूब वीडियो देखकर, एटलीस्ट उनको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होगा एज कंपेयर टू द पीपल जो लोग आधे मिनट 1 मिनट के रील में देखकर आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने। और उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी पता है कैसी होती है, जैसे हम जैसे लोगों का 31 को दिसंबर को होता है रेजोल्यूशन, इस साल तो डेफिनेटली बॉडी बनाऊंगा, और जनवरी में आते आते फेड आउट हो जाता है। तो इनका भी रेजोल्यूशन होता है कि इस साल तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करूंगा, क्योंकि मैंने अभी रील देख लिया है, इंस्पायर हो गया हूं, मोटिवेट हो गया, अब तो शुरू करूंगा। और शुरू करने के बाद जैसे पहले आते थे रील्स, बैंक FD में पैसा मत डालो, लोगों ने FD से पैसे निकाल लिए। फिर आ गया बैंक FD में पैसे डालो, लेकिन उसको है ना प्रॉपरली ये करो, स्टैक करो, 1 ईयर वाला FD, 2 ईयर वाला FD, 3 ईयर वाला FD। ये क्या हो रहा है ना, ये अलग अलग चीज आ रही है, हर थोड़े महीनों के बाद कुछ नया रील आ जाता है। तो वैसी वाला नहीं, विकसित भारतीय वो है जो समझता है कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ आज या कल की बात नहीं है। ओके, वो बात है पूरे के पूरे फ्यूचर की। जैसे वो चाय बनाने वाला चाय पत्ती, दूध, ये सब डालने के बाद पेशेंस रखता है, न कि बस मिक्स कर दिया। प्री मिक्स वाली चाय नहीं होती उनकी, प्री मिक्स वाली चाय में टेस्ट होता है क्या, आप बताइए। Mr. Narayana Murthy, can you hear फ्लाइट us? में पीना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन टेस्ट नहीं होता। Mr. टेस्ट Narayana वही होता है Murthy, जब I वो can't hear you, but उबल just to के inform you, in the ओके, next और वो 5 ऊपर minutes is तक your आती है, session. फिर उसको गैस You से will be उठा लिया given जाता है, 10 फिर minutes to रखा जाता है, 10 फिर जब minutes. उसकी वो जो So टेस्ट please बनती refer है, your वो chats. टेस्ट बनती है पेशेंस Please के refer your साथ। chats in the group. तो वो है विकसित भारतीय Sir, जो we've जानता messaged है you the chat. कि इन्वेस्टमेंट Chat. I जर्नी can't में hear you. पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। I said I won't be able to hear विकसित you. Can भारतीय you वो check है your chats जो ये in the समझता group? है कि हम सब लोग यहाँ पर जो So the आते हैं, chat in सीखते this हैं, meeting. Can you फाइनेंशियल reply? लिटरेसी की दुनिया में कमी नहीं है। इंडिया में फाइनेंशियल the लिटरेसी chats- बहुत है, Meeting chat. कमी है एक्शन की। एजुकेशन लेते हैं, एक्शन नहीं लेते। जो विकसित भारतीय है वो ये जानता है कि वो अगर 25% रिटर्न के चक्कर में जाएगा तो 100% वहां पे गवा के आएगा। वो है विकसित भारतीय। तो हमें भी अब जो बनना है वो है विकसित भारतीय बनना है। इनफैक्ट जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी 2014 में, टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले ट्रेनिंग शुरू की थी मैंने, तो वहाँ पर फीडबैक एक ही आता था कि सर ये हम लोग को अगर 25-30 साल पहले मिले होते तो और ज़्यादा यूज़फुल होता। तो ये जब हर बैच में यही फीडबैक आने लगी तो उन्होंने क्या कर दिया, मेरे ट्रेनिंग को अपने इंडक्शन का 1 डे इंडक्शन का मेरे को देते हैं कि आप इनको इंडक्शन में आके ट्रेनिंग दे के जाओ। विकसित भारतीय वो है जो डे 1 पे समझता है कि सैलरी आने के पहले मेरा प्लान होना चाहिए। विकसित भारतीय वो नहीं जो ये सोचता है कि जब पैसा आएगा तब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करेंगे। प्लान पहले आता है, पैसा बाद में आता है। आज के टाइम में देखेंगे बहुत सारे लोग जो है अभी कॉलेजेस में, मुझे कई कॉलेजेस में इनवाइट किया जाता है, कॉलेजेस में भी लोग चाहते हैं
कि उनको फाइनेंशियल लिटरेसी मिले। पहले के टाइम में बिकॉज आई चार्ज, मतलब कंपनियों को तो मैं चार्ज करता हूँ, एसोसिएशन के लिए मैं कॉम्प्लीमेंट्री करता हूँ, लेकिन कंपनीज को मैं चार्ज करता हूँ। तो पहले सिर्फ बड़ी कंपनियाँ आती थी, आज छोटी छोटी कंपनियाँ, स्टार्टअप कंपनियाँ भी आ रही हैं, बिकॉज उनको ये समझ में आ गया है कि विकसित भारत में विकसित भारतीय को ज़्यादा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा बचाना इंपॉर्टेंट है। विकसित भारतीय ये जानता है कि जब लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, तो यूएस जैसा होता है, कितनी बार रिसेशन आता है। इंडिया में कितनी बार रिसेशन आया और अमेरिका में कितनी बार आया। विकसित भारतीय ये जानता है कि मुझे बाकी कंट्रीज को फॉलो नहीं करना है ब्लाइंडली, बाकी कंट्रीज का मुझे ट्रेंड ऑब्जर्व करना है। जैसे कई बोलते हैं कि सर लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट होता है, आप किसी भी जगह पर हो, किसी भी कंट्री में हो, प्रॉफिट होता है। मैंने कहा लॉन्ग टर्म मैंने किया था, 25 साल के लिए इन्वेस्ट किया था। 1989-90 में मैं जापान गया था, वहां पे इन्वेस्ट किया था। 30 साल तक वो अपना पीक पे नहीं पहुंच पाया, 30 साल तक इन्वेस्ट होने के बाद भी लाख रुपए का लाख रहा। ओके, तो विकसित भारतीय को ये समझ में आता है कि हमको, अगर हम लोग विकसित भारत की बात करते हैं तो हमको ये भी समझना है कि विकसित जो भी देश होता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेपो रेट कम होता है कि ज़्यादा होता है, क्योंकि वहां पर सप्लाई बढ़ जाती है। सप्लाई जब बढ़ जाती है, डेवलप हो जाता है कंट्री, जब सप्लाई बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली वहां पे इन्फ्लेशन भी जो है कम होता है कि ऊपर होता है, नीचे जाता है, राइट। तो जहां पे इन्फ्लेशन नीचे जाता है तो आपका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। तो विकसित भारतीय सिर्फ अपने देश को ही नहीं, बाकी देश की भी पुरानी, जैसे यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे हमको रिकॉर्ड दिखाए गए, डेटा दिखाया गया कि कैसे बाकी कंट्रीज का कैसे ट्रेंड रहा है। तो विकसित भारतीय उन सबको भी समझता है। विकसित भारतीय अपने एक एक पैसे को बचाता है। विकसित भारतीय जो है रिस्क को समझता है, जरूरत और ख्वाहिश। विकसित भारतीय कभी भी रिटायरमेंट प्लानिंग एक गोल नहीं समझता, उसे पता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है अपनी जरूरतों के लिए और दूसरा होता है अपने लाइफस्टाइल के लिए। जब विकसित भारतीय अपनी जरूरतों के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसे पता है कि मुझे सिक्योर्ड ऑप्शंस में जाना है, जहां पे मुझे रिस्क लेने का ये सब डर ना हो। और जब वो अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपनी लाइफस्टाइल के लिए इन्वेस्ट करता है तो वहीं पर वो एक रिस्क लेता है। वो विकसित भारतीय समझता है कि वेल्थ प्रोटेक्शन और वेल्थ क्रिएशन में क्या फर्क है और उन दोनों को बैलेंस करके चलता है। विकसित भारतीय वो है जो समझता है कि हमारे फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले होती है फाउंडेशन। पहले अपनी वो फाउंडेशन बनाता है, यानी अपने वेल्थ को पहले प्रोटेक्ट करता है। जितने भी तरह के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, ये सब इंश्योरेंस अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। फिर अपनी ज़रूरतों की प्लानिंग करता है और उसके बाद जितना पैसा एक्स्ट्रा इनकम हुई वो पूरा डाल देता है, रिस्क ले लेता है। और वही इंसान जो है ज़्यादा ग्रो कर पाता है क्योंकि उसमें रिस्क लेने की ताकत है, उसकी एबिलिटी है, उसने अपना सिस्टम जो है वो बनाया है। विकसित भारतीय वो है जो सिर्फ प्रोसेस और पीपल, ये दोनों पे ज़्यादा फोकस करता है, न कि प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट तो हर जगह बताया जाता है, लेकिन वो जानता है कि मैं एज अ पर्सन मुझे क्या करना चाहिए। विकसित भारतीय वो है जो सिर्फ उम्र के हिसाब से इन्वेस्टमेंट एसेट एलोकेशन नहीं करता। आज भी मेरे पास सीनियर एज वाले लोग आते हैं गुजरात से, वो बोलते हैं हमको पूरा इक्विटी में डालना है। आज भी मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं जो बोलते हैं सर हमको रिस्क नहीं लेनी है। तो एज से नहीं, वो ये देखते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मेरे गोल्स कैसे हैं, अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्ट करता है। तो ये होती है डेफिनेशन एक विकसित भारतीय की। तो क्या लगता है आप लोग को विकसित भारतीय बनना है कि नहीं बनना है? ओके, तो उसके लिए मैं अभी एंड करूंगा सेशन को, और एंड में क्योंकि मैंने पीपीटी नहीं दिखाई तो कुछ और दिखा देता हूं आप लोग को। गूगल पे अगर आपके पास आईफोन है तो आप एलेक्सा को पूछ लीजिए, और अगर आईफोन नहीं है तो गूगल पे जाके डाल दीजिए हु इज इंडियाज नंबर 1 फाइनेंशियल कोच। जैसे राजेंद्र जी ने स्टार्टिंग में कहा कि नाम से कोई नहीं ढूंढता है, कीवर्ड से ढूंढते हैं। तो आप ढूंढ लीजिए हु इज इंडियाज नंबर 1 फाइनेंशियल कोच, मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल मिल जाएगा और मेरे से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Kamal, for joining us.